So this is chapter number 10, mechanical properties of fluids. Fluids are those substances which can flow because of the pressure difference. And for example, liquids and gases. But in this chapter, we'll be confining our studies to the liquids only. Gases will be done separately in the next chapter. Okay, most of the focus will be on the liquids only. Liquids are everywhere. Liquids are present everywhere around us, even in the body also. 70% of the living bodies are liquids only. Blood is flowing in the vessels, air also. I mean, fluids only. Fluids is around us completely. Without this, life will not survive. Even while sleeping also, fluids is flowing into our body. Gases are, our air is moving in and out. We are breathing in and breathing out. That gas and that oxygen, nitrogen. Blood is flowing in the blood vessels and keeps us alive. And in fluid also, liquid is mostly 70% of this covered by the liquid only. Earth also, है ना? Liquid is 70% of that, है ना? तो liquids जो होते हैं, they are almost incompressible. Liquids are almost incompressible. You cannot compress them. Liquids, ऐसा लगता है कि liquids को compress कर सकते हैं, but it is not true. Liquids are almost incompressible. इसीलिए तो हम लोग ब्रेक सिस्टम में लिक्विड फिल करते हैं. ब्रेक सिस्टम कार का अगर देखिए आप, कार, ट्रक्स, एरोप्लेन की, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स आर ऑपरेटेड बाय द लिक्विड्स ओनली, विच इज इनकॉम्प्रेसिबल. अगर कॉम्प्रेस होगा तो ब्रेक नहीं लगेंगे, है ना. वी कैन ब्रेक्स विल नॉट बी दैट इफेक्टिव. क्रेन्स, liquid cranes, easy to operate. Aeroplanes controls, easy to operate with the help of liquid control control systems. Brakes, easy to press the pedal in case of brake system having the liquids, है ना. Otherwise mechanical brake होंगे तो it will be difficult. More force will be needed to apply the brakes. So many uses, because of they are incompressible and can flow easily, and they cannot sustain the liquids cannot sustain the tangential force. Liquid cannot sustain tangential force. तो इनकी shear modulus will be almost negligible, zero. थोड़ा भी tangential force लगेगा, they will start flowing. Agreed or not? अभी हम लोगों ने shear stress जो पढ़ी थी, solids के लिए थी, liquids के लिए it will be almost zero, है ना. But vertical force they will sustain. Normal force, है ना, normal force, because they cannot be compressed. The normal forces they can sustain. So from that normal forces, new term comes pressure. Force को यहाँ पे हम pressure से replace कर रहे हैं, because easy to explain the things with the help of pressure as far as liquids are concerned or gases are concerned. So new term is introduced called pressure. ठीक है? So you have some idea about the pressure. Pressure is nothing but a perpendicular force which is called thrust divided by area, है ना. Thrust per unit area. तो प्रेशर को थोड़ा सा और फील करने के लिए we can just have this example. Sharp needle when pressed against our skin pierces it. Sharp needle, जैसे vaccination की needle है, sharp है, it is piercing into the skin, whereas blunt objects like back of the spoon cannot pierce into the skin easily.
ठीक है, ऑलराइट। तो लेसर द एरिया मोर इज द प्रेशर। यहां से हमें क्या पता लग रहा है? स्मॉलर द एरिया ग्रेटर विल बी द इम्पैक्ट। स्मॉलर द एरिया ग्रेटर विल बी द इम्पैक्ट। तो डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इज इफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स, सपोज ये कोई सरफेस है, उसके ऊपर एफ इज द नॉर्मल फोर्स which is also called thrust. A is the area of the surface, then pressure will be force per unit area, force upon area, F upon A. Can you see it? It is the scalar pressure, is the scalar quantity. What will be its unit? उसकी unit क्या होगी बोलिए? Its SI unit will be Newton per meter square or PA. PA stand for the Pascal. Scientist का नाम है. We are going to see the Pascal's law in next classes. तो साइंटिस्ट के नाम से यूनिट पास्कल। एंड ये देखो इसकी डायमेंशन M(L-1 T-2). थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी हमने, ये किसकी डायमेंशन थी? ये whose dimension it was? Sir, energy density. Energy density, yes. ठीक है। Common unit of pressure is ATM also, atmosphere. Common unit of pressure is ATM, that is atmosphere. That is the pressure exerted by the atmosphere at sea level. One atmosphere is 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. We are under this much huge pressure. 10 to the power 5 means 100,000. 100,000 means 1 lakh. 1 lakh SI unit के pressure के under में हम लोग. Our body is continuously sustaining this much pressure, 1 lakh of SI unit of the pressure, 24/7. Getting or not? So this is the pressure apart from the other pressures, है ना? और pressures हैं, but उनकी unit ये नहीं होगी. This is the pressure due to atmosphere, which is the force upon area, है ना? And that is what is atmosphere is exerting this much pressure on our body 24/7. Our heart is used to this much pressure. If pressure increases, there may be the problem. If pressure decreases onto our body, then also there is the problem. Pressure decrease से क्या problem आ सकती है? Because our heart is used to pump the blood according to this pressure. If pressure, outside pressure is less, then there is the problem of bleeding may take place from the nose. Yes, sir. है ना? Sensitive part है, वहां से nose से bleeding हो सकती है because outside pressure is less. Heart is pumping at more according to that. तो bleeding start हो सकती है nose से, है ना? Sir, So even the ear therefore, sometimes. ears also, and therefore astronauts are ensuring that that much pressure is there always around the body to safeguard the body against the less pressure, because heart will be pumping according to that. Getting or not? Even if you happen to go to the other planets and moon पे भी गए, वहां पर भी you have to ensure that the pressure around the body should be artificially made that much. वहां पे तो pressure ही नहीं, atmosphere is not there. Why the atmosphere is not there at moon? Can somebody tell me? moon पर atmosphere क्यों नहीं है? बोलिए. I told you when we saw the escape velocity, escape speed पढ़ी थी, तो वहां पर हमने Yes, sir. डिस्कस किया था why the pressure is not there at moon, because RMS is, I mean escape speed is more of the gas molecules. They will escape from the gravitational pull of the moon and go away. So no atmosphere is formed there at moon because escape speed is less and speed of the gas molecule is more. ठीक है? Yes, sir. Sir, Yeah. when entering the Earth via any rocket or spaceship or anything like that, they have these heat Yes. shields because
they burn. So because is of it the high because of the speed. pressure? No. Because of the very, very high speed, there is the friction of air resistance that creates a lot of heat. To safeguard against that heat, it should not be transmitted inside, है ना? Yes, तो sir. वो है फ्रिक्शन की वजह से. Because the speed we have discussed, the satellites close to the earth have got the speed 8 kilometer, roughly 8 kilometer per second, which will happen to be more than 25 kilometer per hour, quite a Yes, fast. sir. Our bullet train will run at 500 kilometer per hour, and satellites enter the capsule which you are talking about. They will enter into the Earth's atmosphere at that much huge, enormous speed, which is 25,000 kilometer per hour. A lot of air resistance and lot of, therefore you see any asteroids, any that celestial fragments Yes, sir. enter They into look the like atmosphere. comets. Yes, Comet, sir. they burn, but it starts burning immediately, Yes, because sir. their speed is further higher. So our atmosphere is safeguarding us from these other objects also. They will burn. If it is comet is very huge, then it will create the danger, that risk for the life on the earth. I think it is 100 years away from now. The huge comet is approaching. तो उसको 100 years हैं अभी भी, I think. So meanwhile we are safe. No risk at this juncture in near future. ठीक है? Yes, sir. Thanks to the scientists, they are all calculating and keep informing us, है ना? Yes, sir. They Okay. even So made that. Yes, sir. yes. ठीक है? So in this chapter we have seen, those who joined late, we have started chapter number 10, mechanical properties of fluids. Fluids are those substances which can flow, liquids and gases. We'll be focusing only liquids in this chapter, gases in the next chapter. So liquids are almost incompressible, and they cannot sustain the tangential force. They will start flowing. थोड़ा भी tangential force होगा, so they will start flowing in that particular direction. And pressure, we have done. Pressure is the force upon area, force per unit area. Suppose this is the surface on which perpendicular pressure is the perpendicular force per unit area. Perpendicular force is called thrust. So force thrust divided by area is called pressure, and SI unit is Newton per meter square or Pascal. Dimensions will be m, L minus 1, T minus 2, and pressure due to atmosphere is 1.013 into 10.5 Pascal. It is quite a big, as far as SI unit is concerned. It is huge pressure. 1 lakh, 100,000, more than 100,000 SI unit. Got it? तो प्रेशर हो गया. अभी हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज ओके, वन मोर पॉइंट अबाउट दिस वन. ठीक है, तो ये आप प्रेशर देख सकते हैं. इनिशियल वाज द इंट्रोडक्शन. नाउ वी हैव seen the pressure definition and 1 atmosphere also, how much. Okay, initially we did this introduction only, fluid define किया हमने chapter number 10 में, and then we did the pressure. ठीक है. Sir, No, yeah. sir, what is the बोलिए. difference between stress and pressure, whereas both have the same formula, force upon area? I told you in when the force is perpendicular, normal force, when the force is Okay. normal, then stress will be called pressure. तो वहां भी हमने stress लिखा था, लास्ट वाला था ना, volume stress. In that, force was perpendicular, then that stress was also called hydraulic pressure, है ना. तो perpendicular force, stress में force may be perpendicular or may not be, but pressure will always deal with the perpendicular force, है ना. Unit of stress and pressure will be same. Unit of stress, pressure and energy density, all three will have same unit. यहाँ पे लिख दूं मैं. You can write your own. I mean dimensions, है ना. Dimensions of
Dimension of stress, elastic modulus, moduli, plural में we call it moduli, L double I है ना, elastic modulus, pressure and energy density are same. Dimensions are same है ना, ठीक है. So this can be good question for your competitive examination. और एक पॉइंट देख सकते हैं नोट में, we can use this point, आगे काम आएगा. When an object is submerged in a fluid at rest, fluid will exert a force on its surface. This force is always normal to the object's surface, regardless of its orientation. Suppose ये ऐसे फ्लूइड है, ऐसे आपने फ्लूइड में डाल दिया, कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लेट ले लिया आपने, सपोज यू द वन प्लेट, इसको ऐसे रखेंगे तो नॉर्मल प्रेशर विल बी, it will be applying the force perpendicular. Why it is so? एंगल पे भी आपने रखा तभी भी परपेंडिकुलर रहेगा. बिकॉज why it is so? Because सपोज आपने सरफेस को ऐसे रखा है ना, प्रेशर हैज टू बी परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ द साइड है ना. अगर परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल पे है, सपोज यू टेक इट एट एंगल, ऐसे सरफेस पे से एंगल पे है, तो उसका ये वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट विल बी टेंजेंशियल. तो ये फ्लूइड को ये सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, सरफेस उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी, तो लिक्विड कैन नॉट सस्टेन द टेंजेंशियल प्रेशर, तो लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग है ना. एंगल पे सपोज कोई सरफेस ऐसे है, चलो ऐसे ले लेते हैं, तो अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो उसका ये वाला कंपोनेंट तो सरफेस पे इधर फोर्स लगाएगा, सरफेस उसको इधर लगाएगी है ना, तो लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग, which is not Yeah. correct. अगर कंटेनर में लिक्विड रखा है तो where it will flow? It will not flow. It will remain at rest. All the particles of the fluid will be at rest. So it has to apply normal force, so that surface will also apply the normal force, and both will balance each other. And liquid can sustain the normal force. It cannot sustain the tangential force. देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टेंजेंशियल फोर्स सस्टेन नहीं कर सकता. जैसे ही टेंजेंशियल फोर्स लिक्विड के ऊपर लगेगा, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग है ना. इट कैन नॉट होल्ड इटसेल्फ. थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो देयर विल बी द फ्लो ऑफ द लिक्विड. दे कैन नॉट रेजिस्ट द टेंजेंशियल फोर्स. तो इसलिए नॉर्मल फोर्स के साथ अगर दे विल अप्लाई द नॉर्मल फोर्स, कोई सरफेस को हमने एंगल पे भी डाला, देन आल्सो नॉर्मल फोर्स विल बी एक्टिंग. ठीक है, तो ये यूजफुल पॉइंट हो सकता है आपके लिए. नॉर्मल लिक्विड विल अप्लाई द नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस irrespective of its orientation. Orientation means angle. You keep it like this, then also normal force. Keep it like this, then also normal force. Keep it like this, then also normal force. ठीक है, so that point will help you in case of any confusion. आपको ये point help करेगा normal force वाला. ठीक है, तो we will recall it again also, because they cannot sustain the shear force. यहाँ पे लिख दूं मैं, because liquid cannot sustain, because ये एंगल पे लगाएगा तो सरफेस भी उसको एंगल पे न्यूटन थर्ड लॉ से लगाएगी, तो they cannot sustain, because they cannot sustain tangential force. Tangential force है ना. ऑलराइट, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया, ये प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट है सारे. प्रेशर के क्वेश्चन, सपोज हम लोग when we are walking on the ground, walking on the road,
whatever force, whatever pressure we apply on the road, on the surface of the earth, will be double when we lift one of our legs. एक leg हम ऊपर कर लें तो pressure will be double because area is reduced to half. जब हम एक पैर को ऊपर उठा लेते हैं तो pressure on the earth will be double. It will be double because area goes down by half. तो एक पैर पे अगर खड़े हो गए तो अर्थ के ऊपर प्रेशर डबल हो जाता है. कन्विंस और नॉट? Yes, sir. Makes sense. ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन भी है आपकी टेक्स्ट बुक का. ओके, ये तो सॉल्व एग्जांपल है, यू कैन इजीली डू इट, है ना. अच्छा, ये बोन्स आई थिंक टू थाई बोन्स, each of cross sectional area 10 centimeter square, support the upper part of the human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure sustained by the thigh bones, है ना. तो एरिया, दोनों का एरिया निकाल लिया. टू थाई बोन्स है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 to the power -4 करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. एंड फोर्स विल बी हाउ मच? 40 kg इंटू 10 हो जाएगा. 400 Yes, sir. G10 ले रहे, 400 हो जाएगा. तो 400 डिवाइड बाई 20 into 10 to the power -4 will give you this much. This much pressure is there. Thigh bones के ऊपर इतना प्रेशर रहेगा. Quite high pressure again, है ना. 2 lakhs of the SI unit. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओनली थिंग यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट. देखो यहाँ पे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है और ये G से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट करना है. देन यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द फार्मूला. When the area is significant, then we call it average pressure. When the area is very small, then we write the pressure. Area बहुत कम हो जाता तो pressure लिखते हैं ना. F upon A. Small area के लिए pressure. Area जो है, if it is area is significant, तो average pressure. No big difference. Just you can. देखो ये question है. Single ये 50 kg girl wearing high heel shoes balances on single heel. Single heel पर है और heel का एरिया दिया है, आई थिंक, है ना. Heel is circular with the diameter 1 centimeter. प्रेशर निकालना है. Very high pressure will be there, है ना. तो you can find out. कैसे करेंगे ये? फिर से सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन. इसमें एरिया आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन वेट कितना है, फोर्स कितना हो जाएगा? mg 50 into 10 500 हो गया ना. ऐसा यूनिट में लिखना है, न्यूटन में. एरिया कैसे निकालेंगे बोलो? सिंगल हील Sir, 1 pi r square. So we'll pi find the square area will radius be, first, which is half, हाँ, and then pi. तो पाई आर. रेडियस डायमीटर, रेडियस विल बी हाफ, है ना, into 10 to the power -2 also you have to do. सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -2. तो पाई बाई 4 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया 500 अपॉन पाई बाई 4. 4 ऊपर आ जाएगा और ये भी 10 to the power -4 है. इट विल बी 20 अपॉन pi into 10 to the power 6 Pascal. So this is roughly coming 6.2 into 10 to the power 6 Pascal. Quite high pressure, है ना. Narrow hill पर खड़े होने से pressure और बढ़ गया. So how much will be the pressure if she stands on both the hills? Both the hills पर है तो Sir, half of this. तो नीचे, हाँ, हाँ, एरिया नीचे डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना. 2 लिखना पड़ेगा, 2 भी आ जाएगा. तो हाफ ऑफ दिस हो जाएगा 3.1 into 10 to the power 6 Pascal if she stands on both the hills. तो pressure will decrease. और हम लोग जब सब when we lie down on the surface, बेड पर जब हम लोग सो जाते हैं तब pressure is further decreasing because area of contact is more now. While standing, pressure is more as compared to sitting or lying on the bed. जब बेड पे सो जाते हैं मास तो उतना ही रहेगा अपना, वेट तो सेम रहने वाला है, बट एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस.
Getting or not? Yes, sir. All Yes, right. sir. Yes. So this is the solved example. No, this is exercise 10.5, 10th chapter, 5th question of exercise. Yes. Sir, there was this very famous question which was asked, that sleeping on thousands of nails and standing on one single nail Yes. pierces. Yes. So, Thousands sir, of nails. this Yes, is the very concept correct. behind it. हाँ, many nails are there, है ना? बहुत सारे nail Yes, है, बहुत सारे nails है, तो area increases, pressure decreases, it will not pierce into your body, है ना? ऐसे सो गए, ठीक है? It Yes, will sir. be safe, it will be safe. अगर बोला जाए you have only 10 nails, then there will be problem, है ना? Yes, sir. Then they will pierce into the body. Load will come onto that, है ना? Small areas, they will act as a, similar to the vaccination, है ना? Vaccination Yes, sir. needle. फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. And circus also, है ना? Circus में भी that they put the wide plank on the chest, then elephant can pass, है ना? So one elephant can put the one leg on the chest and then other legs on the ground, so that pressure will not be that much high. You know, so there are so many examples. You can just take this for the pressure. You know. All right. So थोड़ा सा और some more. We can just do this density part up also. Density also. Density of the fluid or substances. You know, density is mass per unit volume. And the density of any substance is mass m. It is given by mass per unit volume. It is mass per unit volume. And density is defined as mass per unit volume. And तो फार्मूला क्या बनेगा? मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मींस डी टू डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी का सिंबल रो है, मास इज इंडिकेटेड बाय एम, वॉल्यूम इज बाय वी, एंड इट विल बी पॉजिटिव, है ना? प्रेशर भी पॉजिटिव रहेगा, पी विल आल्सो बी, प्रेशर विल आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, है ऑलवेज पॉजिटिव. नेगेटिव प्रेशर होता है क्या? नहीं. इफ प्रेशर गोज डाउन वी कैन से partial vacuum or partial pressure, and when there is no pressure we call it vacuum, है ना? तो pressure will not be negative. Similarly, the density will also be not be negative. Density भी positive होगी ना. And density is also scalar quantity. And SI unit क्या होगी? Mass per unit volume. kg per meter cube. Dimensions ये आ जाएंगे. ठीक है, density का. और mostly we are replacing mass. Cross multiply करेंगे, देखो mass कई जगह में replace करना पड़ता है. If you cross multiply, mass is equal to volume into density. कई जगह में न्यूमेरिकल्स में मास की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, which is nothing but a mass is equal to volume into density, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, देखो क्लियर और नॉट? Yes, sir. और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? जस्ट सम मोर रिलेटिव डेंसिटी. अच्छा, ये पॉइंट देख लो, एक वन मोर पॉइंट यू कैन सी. एसटीपी स्टैंड फॉर व्हाट? केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा. एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, आर यू देयर? Yes, sir. एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लिया जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में कितना होगा? डू यू नो? 1 degree Celsius is 273 Kelvin. 23 Kelvin. Yes, sir. Yes, I will teach you in the next chapters. And 1 atmosphere just now we have seen कितना था? 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. ऐसा यूनिट में इतना लिखना पड़ेगा, केल्विन में लिखना पड़ेगा, इसको पास्कल में लिखना पड़ेगा. Got it? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स 0 degree Celsius and 1 atmosphere pressure. ठीक है, तो ये आपको देखो डेंसिटीज दिख रही है कि यहाँ पर वाटर की डेंसिटी हमने लिखी क्या? यहाँ पे लिखना जरूरी है वाटर की डेंसिटी. लेट मी राइट हियर डेंसिटी ऑफ वाटर.
is 1000. नीचे लिखा होगा शायद मैंने, are related to से लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, density of water is 1000 kg per meter cube. ठीक है, और सीजीएस में कितनी होगी, एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस. सीजीएस में 1 ग्राम, 1 ओनली, बट एसआई में 1000. याद रहेगा आपको, इजी टू रिमेम्बर. वाटर इज having the density, easy to remember, user friendly, 1000, है ना. ऐसे समझ लो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब. अगर आपने एक वाटर टैंक लिया 1 मीटर का, 1 मीटर साइड का, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब. उसके अंदर 1000 kg वाटर आ जाएगा. दैट्स व्हाट यू कैन जस्ट रिमेम्बर. पानी का जो ओवरऑल टैंक है, अगर उसकी साइड क्यूबिकल शेप है, 1 मीटर का है साइड, ईच साइड, तो इट विल कंटेन 1000 kg वाटर, एंड 1 kg विल बी इक्वल टू 1 लीटर आल्सो. वाटर के केस में 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर आल्सो, बोथ आर इक्वल. लेकिन लिक्विड, बाकी लिक्विड्स के लिए सेम नहीं होता है. It can 1 liter can be more than 1 kg or less than 1 kg depending upon the density of the liquid. But water will have exactly 1 liter will be equal to 1 kg. So you don't have to worry about the things. Water have got all simple values. You can easily remember. ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी है, देखो वाटर का कितना दिया है, 1000 है. सी वाटर का थोड़ा सा ज्यादा है, 1030 है. मर्क्यूरी has got 13.6 times more. अल्कोहल का कम है, देखो less than that of water. Whole blood is slightly more than the sea water and normal water. Air has got very low value of density. ऑक्सीजन की कम है, हाइड्रोजन की और कम है, and interstellar space is quite a low. Most of the places there is vacuum, no material, empty space है, इसलिए interstellar space है. You don't have to remember, just you have to remember this water का तो याद रखना है. Mercury also it will be given to you. We need this mercury. वाटर का लर्न करना पड़ेगा. If it is not given, you have to just remember. बाकी other things should be given to you. All right. Sir, Yeah. sir, water's density is greater than that of human beings, right? Like that of blood. ब्लड की ज्यादा है ना, ब्लड इज मोर. देखो यहाँ पे होल ब्लड इज हैविंग मोर. Yes, sir. Sir, but like human beings, is it water's density? Is it greater than human beings? Like an almost average close human to each being? other. Close है water and human being की density close है, therefore we can float in the water. है ना? Sir, that's what I was लेकिन questioning. स्विमिंग आनी है, स्विमिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं. Yes, स्विमिंग sir, नहीं आ but रही तो very close. We doesn't can make manage sense. to swim. Yes, sir. Sir, because you know, even if we can't swim, that means that if we just lie down on water, we will be able to float. Yes, yes. But because of fear, we Sir, go we drink the down. water. उल्टे Yes, सीधे sir. हाथ पर, beating the water and just hitting it and then उल्टे सीधे हाथ पर चलाते हैं तो नीचे चले जाते हैं because of fear only. But if you jump in the water from the height, you come up, अपने आप ऊपर आते हैं. You must have, those who know the swimming, उनको पता है ना. हाइट से जंप करेंगे तो ऊपर आते हैं वाटर की सरफेस पर. देन यू कैन मैनेज. यहाँ पे क्लोज कर दूं क्या? Just shall I close it? Next class we'll see the other points related to this.
because you may have the other class. Thank you. Okay, sir. Yes, Thank you, sir. sir. Thank you.